Hello everyone, welcome to Sorosa classes. This is the question given that S is equals to union of xy belongs to R square, x minus n square plus y square equals to 1 by n square. So S is the union of n 1 to infinity x comma y belongs to R square such that x minus n square plus y square equals to 1 by n square. So हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? पहला u1 क्या होगा? u1 is x minus 1 square plus y square equals to 1. That's mean like this. This is the u1. Where this is 1 comma 0. u2 is x minus 2 square by 1 by 2 का whole square. That means this is 2 and u2 radius है इसका 1 by 2, so u2 like this. Okay, this is center c1, this is c2. c3 होगा same distance पे, but as the radius is 1 by n, this continuously tends to 0, so इसका distance छोटा होता रहेगा. तो c3 अब c2 को कभी क्रॉस नहीं कर इंटरसेक्ट नहीं करेगा. सिमिलरली c4 और थोड़ा छोटा होगा. सिमिलरली मतलब दिस सर्कल और थोड़ा छोटा होगा. c5 के रिलेटेड सर्कल और छोटा होगा. तो ऐसे करके इनफाइनाइट चलता रहेगा. तो इनफाइनाइट में कौन सा सर्कल रहेगा? दैट मीन्स x माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब with center at infinity and radius is 0. So the set are the union of these circles. Okay, अब देखिए C1 C2 इंटरसेक्ट कर रहा है, बट C3 C2 को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. C3 के कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा. C4 को कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल है वो भी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड. सो एस इज डिसकनेक्टेड. कनेक्टेड होने से तो पहले इंटरसेक्ट तो करना पड़ेगा ना इन द टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज नॉट डिसकनेक्टेड, तो सिंपली हो गया. ओके, सो एस इज connected, S is disconnected, S is not connected. So D is true, C is false. Now A हम लोग अगर देखेंगे, AS is the union of these circles which is unbounded because ये infinity तक चलता रहेगा. तो कभी भी बाउंडेड नहीं है बिकॉज ऐसे करके सर्कल ऐसे करके इन्फिनिटी चलता ही रहेगा. तो ये कभी बाउंडेड नहीं है. बट इन यूजुअल टोपोलॉजी आर स्क्वायर वी नो दैट ए सेट एस इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट व्हिच शुड बी क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड, बट एस इज नॉट बाउंडेड. ये तो बाउंडेड कभी नहीं होगा. सो एस इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट, सो एस इज नॉट कॉम्पैक्ट. सो एस इज नॉट कॉम्पैक्ट मीन्स दिस इज ट्रू. This is true, so B is false. Therefore, A and D are the true option. This is the simple question. 2 marks का question था. So in usual topology R square, this set is neither connected nor compact. So A and D are true. Thank you.